वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है एनालाइज द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी अराइजिंग फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ प्राइवेट कंसल्टेंसी एक्सपर्टीज इन पीएसयू रिफॉर्म्स कंसीडरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड एथिकल अकाउंटेबिलिटी। पहले हम लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, दैट इज कंसल्टिंग मार्केट इन इंडिया इज एंटिसिपेटेड टू रीच $30 बिलियंस बाय 2030. Now this resilience of PSU on private consultancy firms has become double-edged sword. अब इसके challenges बताएंगे, that is number 1 is governance issues, weakened democratic accountability, that is policy formation shifts from public to private firm. Next is lack of transparency in consultancy appointments and decision making. Third point is economic efficiency. High consultancy fees leads to strained PSU budget. Next is diversion of funds like infrastructure, service improvements to consultancy. Third is ethical accountability issues. Potential misuse of confidential government data, risk of favoritism and lobbying in influencing policy decisions. Next is opportunities in integrating private consultancy. Number 1 is improved governance. Bring in global best practices. इसके अंदर हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इम्प्रूव्ड गवर्नेंस का, जैसे कि KPMG's रोल इन रिकन्स्ट्रक्टिंग SBI's improved digital banking efficiency. Second is economic efficiency gains. Can facilitate cost cutting, revenue enhancement, technology adoption. Third point is strengthened ethical framework. Ensures performance-based evaluation mechanisms. Example, independent auditing firms. Improved compliance in ONGC's procurement processes. लास्ट में हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे, दैट इज़ प्राइवेट कंसल्टेंसी कैन एनहेंस PSU रिफॉर्म्स इफ़ मैनेज्ड विद रोबस्ट ओवरसाइट, ethical safeguards and strategic utilization. Thank you so much.